welcome class 9. This is Ariba Alim and today we will move to lecture number 2 in which we will do lesson 2. But before moving towards lesson 2, I would ask you people कि क्या आप लोगों ने जो मैंने आप लोगों को lesson 1 में lesson explain किया था and then the exercises that we did वो complete कर ली हैं in your copies or not? If you people have any queries like any query regarding anything that we are doing तो आप लोग स्कूल कॉल करके पूछ सकते हैं. Is that clear? Okay. The lesson that we are going to study today is about a saint. Who is he? He is Shah Abdul Latif Bhattai. I guess most of you are familiar with his name. Are you guys? Okay. ओके एज व्हाट आवर पैटर्न हैज़ बीन सेट कि आप लोग पहले जाएंगे इस चैप्टर को प्रॉपरली वेरी प्रॉपरली रीड करेंगे एंड देन यू पीपल हैव टू कम बैक हियर एंड जॉइन मी सो वी मे प्रोसीड विद द एक्सरसाइजेज एंड ऑल ऑफ द अदर थिंग्स दैट वी डू. इज दैट क्लियर? So go people and read the chapter first. Are you guys done reading? Okay. So before moving towards the exercises, I'll give you a quick review about who is he, and what is basically happening in this chapter, and what we are going to learn, and what is basically a short summary of the chapter Shah Abdul Latif Bhattai. तो बेसिकली शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई जो है एक सेंट है, एक होली सेंट है जो कि कराची में इनका टॉम्ब है, यहाँ होते थे. बेसिकली सेंट क्या होते हैं? सेंट आर दोज पीपल जो है अपनी जो लाइव्स होती है ना, दे डिवोटेड टुवर्ड्स अल्लाह, दे डिवोटेड टुवर्ड्स गॉड, दे डिवोटेड टुवर्ड्स गुड डीड्स, दे डिवोटेड टुवर्ड्स एवरीथिंग दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला लाइक्स. तो इसी तरीके से शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई भी थे. उन्होंने अपनी ज़िंदगी, जब उनके फादर का इंतकाल हो गया, जब इनके फादर व्हेन हिज फादर डाइड, ही वेंट टू अ माउंट ऑफ सैंड. सही है. और वो वहाँ जाके बैठे थे और वहाँ जाके उन्होंने जो अपनी रिमेनिंग लाइफ थी स्पेंट इट देयर. अब वहाँ पे उन्होंने वर्शिप करी अल्लाह ताला की. वहाँ पे वो ही यूज़ टू डू पोइट्री, और पोइट्री में भी उनकी पोइट्री जब आप कभी आप लोग पढ़ेंगे तो यू विल गेट टू नो कि उनकी पोइट्री में भी हम यही बात हमें नज़र आती है कि वी शुड लव ईच अदर, दैट इज़ व्हाट अल्लाह सुब्हानहू व तआला लाइक्स. वी शुड डू गुड डीड्स, द गुड डीड्स दैट आर ऑनरेबल इन द आइज़ ऑफ गॉड. तो वो भी अल्लाह ताला के लिए, मतलब एवरीथिंग. जब इंसान अपनी लाइफ इस तरीके से डिवोट कर देता है अल्लाह ताला के लिए, व्हेन ही बिकम्स अ सेंट, तो उसकी सारी खुशी, उसकी सारी चीज़ें सिर्फ अल्लाह ताला की खुशी के अकॉर्डिंग हो जाती हैं. एंड दैट इज़ व्हाट ही डिड. Okay, he also that he invented an instrument that is called tambura. Tambura is because he was so much interested in music. He gets comfort when he was around music. तो उन्होंने इसीलिए एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी इन्वेंट किया था. अच्छा. ओके एंड व्हाट एल्स इज़ के जो अभी भी ना आप लोगों ने टॉम तो देखा होगा ही. अभी भी हर ईयर 14 सफ़र को शाह अब्दुल लतीफ़ का जो है उर्स मनाया जाता है. बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं, बहुत सारे लोग जो पेपर्स रीड करते हैं टू लेट अदर पीपल नो कि बेसिकली व्हाट हैपेंड इन हिज लाइफ एंड व्हाट हिज पोइट्री इज़ अबाउट, व्हाट मैसेज ही वांटेड टू गिव टू ऑल ऑफ अस. इज़ दैट क्लियर? Moving towards our question answers session. Who was Shah Abdul Latif? Where and when was he born? Shah Abdul Latif was a great saint who is lovingly called Lal Latif by his devotees. He was born in a small village called Hala Haveli in the year 1689. शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई कौन थे और कहाँ और कब पैदा हुए? शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई जो थे एक बहुत बड़े सेंट थे और उनको प्यार से लोग लाल लतीफ़ कहते थे. वो एक स्मॉल विलेज में रहते थे जिसका नाम था हाला हवेली, और कौन से ईयर में? 1689. टुडे इज़ 2020 और 1689 की बात हो रही है. दैट इज़ लॉन्ग एरा बिफोर. What do you know about the ancestors of Shah Abdul Latif? Shah Abdul Latif's ancestors had migrated to Sindh during the days of Tamerlane. They had come from Herat, a town in West Afghanistan. They liked Sindh so much so that they decided to make it their permanent home. Many centuries later, one of their descendants, Sayyid Habib Shah, was blessed with a son who grew up to be Saint Lal Latif. ये कहने के शाह अब्दुल लतीफ़ के जो एंसेस्टर्स थे उनके बारे में, जो उनके दादा परदादा थे उनके बारे में हमें क्या पता है? तो उनके जो एंसेस्टर्स थे ना, दे माइग्रेटेड टू सिंध.
वो लोग हेरात जो है एक एरिया है अब वेस्ट ऑफ अफगानिस्तान में, तो वो लोग वहाँ से सिंध माइग्रेट कर गए। एंड द पीपल लाइक सिंध सो मच दैट दे डिसाइडेड कि अब उन्हें सिंध में ही रहना है। उनमें से एक था उनके जो एंसेस्टर्स में, उनका नाम था सैयद हबीब शाह। तो उनका एक बेटा हुआ, ही वॉज ब्लेस्ड विद अ सन एंड लेटर ही बिकेम सेंट लाल लतीफ़, दैट इज शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई। Why is Shah Latif known as Saint of Wit? When Shah Latif's father died, he left his home and went to live on a mound at some distance from his village. A mound of sand is called Bit in Sindhi. Due to the fact that he lived on this mound for the rest of his life, Shah Latif came to be known as the Saint of Wit. इनको सेंट ऑफ विट कहा जाता है। एंड वाई ही इज कॉल्ड सेंट ऑफ विट, क्योंकि जब उनके फादर का इंतकाल हुआ था तो अपना घर छोड़कर एक अपने जो उनका विलेज था उससे दूर एक जगह पे वो रहने लग गए थे। उसको माउंट कहते हैं, और माउंट मतलब सैंड, सैंड को सिंधी में बिट कहते हैं। तो क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो बाकी की थी वो वहीं गुजार दी, इसलिए उनको सेंट ऑफ बिट कहते हैं, क्योंकि उस भिट पे ही spent the rest of his lives. Name the shrines of saints found in Pakistan. In every part of our country, there are shrines of such saints. In Lahore, the shrines of Data Ganj Bakhsh and Mian Shmesh Sahib. In Patan, lived and died Baba Farid. Multan, shrine of Wasir Bahol Haq. In Sindh, shrines of Shah Abdul Latif and Kalandar Lal Shehbaz. और पेशावर या कोयटा में इन काउंटलेस अदर टाउन्स एंड सिटीज़ देयर आर द टॉम्स ऑफ दीज मैन ऑफ गॉड। हमारे पाकिस्तान में डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट जो है श्राइन्स हैं सेंट्स के, तो दे आर लिस्टेड बिलो। What are the important features of Shah Latif poetry? The important features of Shah Latif's poetry is that it is written in the language of the common people. And other great quality of his poetry beside its simplicity and its moving music. इनकी पोइट्री की क्या ख़ास बात है कि वो एक तो आसान लैंग्वेज में सबको समझ आती है, दूसरी बात है बहुत सिंपलिसिटी सिखाती है, तीसरी बात है उसमें यू विल फील म्यूजिक, यू विल फील serene, you will feel peace. Okay, what is the message of Shah Latif's poetry, or what according Shah Latif is the goal of life? The message of Shah Latif is a message of love. He believed in the brotherhood and equality of men and in pleasing God by good deeds. This according to Shah Abdul Latif is a goal of life. शाह अब्दुल लतीफ़ का गोल क्या था? उनका वो बिलीव करते थे मोहब्बत पे, वो बिलीव करते थे भाईचारे पे, वो बिलीव करते थे इक्वालिटी ऑफ मैन पे और अल्लाह ताला को खुश करने में, और ऐसे काम करने से जो भी ऐसे काम जिससे अल्लाह ताला खुश होते हैं, उनके अकॉर्डिंग यही लाइफ का गोल था, एंड दैट इज़ ट्रू। When is the Urs of Shah Abdul Latif's held? Shah Abdul Latif Urs is held at his shrine every year on 14th Safar, the second month of Muslim calendar. शाह अब्दुल लतीफ़ का उर्स हर साल 14 सफ़र को होता है, जो कि सेकेंड मंथ है मुस्लिम कैलेंडर का। हाउ डू शाह लतीफ़ डिवोटीज सेलिब्रेट हिज उर्स? उनके जो मानने वाले हैं वो कैसे इसको सेलिब्रेट करते हैं? शाह लतीफ़ उर्स इज हेल्ड एट हिज श्राइन एवरी ईयर इन 14 सफ़र, द सेकेंड मंथ ऑफ मुस्लिम कैलेंडर. Thousands of people gather to listen to the saint song sung to tamburo, and after their prayers, many learned men read papers that tell about Latif's life and poetry. शाह अब्दुल लतीफ़ का जो उर्स होता है वो उनके जो श्राइन है वहाँ होता है। वहाँ जो उनके बिलीवर्स हैं, जो जो डिवोटीज़ हैं नॉट बिलीवर्स, वो वहाँ जाते हैं, उनका श्राइन प्ले करते हैं, लोग गैदर होते हैं, प्रेयर्स वहाँ पे जाके नमाज़ें पढ़ते हैं और एक दूसरे को वहाँ के बारे में बताते हैं। What do you know about Shah Latif's music? Shah Latif was not only a saint and a poet but also a great musician. He found great comfort in music. His skill in this art enabled him to make many improvements and changes in the difficult music of his time. He loved simplicity in music and musical instruments. He did not agree with the idea that music should be difficult, so he made it simple and also went it on an instrument called tamburo. उनका म्यूज़िक के बारे में क्या ख़्याल था? तो उनको म्यूज़िक से कंफर्ट मिलता था, उनको उनके लिए म्यूज़िक बहुत एक कोई आम चीज़ नहीं थी, और उनका ये मानना था कि म्यूज़िक को मुश्किल नहीं होना चाहिए, म्यूज़िक का ऐसा होना चाहिए कि इंसान जिससे ईज़ हासिल कर सके, इंसान को जिससे मज़ा आ सके। दैट इज़ वाई ऑल्सो ही इन्वेंटेड एन इंस्ट्रूमेंट टू प्ले म्यूज़िक, एंड दैट इज़ वॉट वी कॉल तंबूरो. What do you know about tambura? The tambura is a simple musical instrument invented by the Sufi philosopher Shah Abdul Latif. I don't think so that I need to explain this question. Write a short note on the poetry of Shah Abdul Latif. उनकी पोइट्री के बारे में एक शॉर्ट नोट.
Shabdul Latif started composing poetry while he was only a boy. Okay, Shabdul Latif was a mystic poet. He was a versatile genius and had attempted all aspects of poetry. Shahidul Latif was a poet of people and was successful in awakening them to the discovery of the truth of spiritual life. He had very deep sympathy for the poor and had expressed in his sentiments about them with great pathos and feelings. His collection of poems was so valued. शाहदुल लतीफ़ की जो पोइट्री थी तब से शुरू हुई जब वो एक बॉय थे, छोटे थे जब वो सही है। उनकी पोइट्री बहुत वर्सेटाइल, बहुत डिफरेंट टॉपिक्स पर है। उनकी पोइट्री से हमें लगता है कि वो एक जीनियस है और उन्होंने हर तरीके की पोइट्री करी है। उनकी पोइट्री बेसिकली ऐसी थी कि लोगों को जगाने के लिए, इस दुनिया की सच्चाई को बताने के लिए थी। और उनके जो थे ना बहुत सिंपैथी रखते थे वो गरीब लोगों के साथ। और उनके ये जो सेंटिमेंट्स हैं, ये जो भी चीज़ें इनकी पोइट्री में हमें नज़र आते हैं। इनकी पोइट्री को इसीलिए बहुत ज़्यादा वैल्यू करा जाता था। ओके, moving towards MCQs. The shrine of Shah Abdul Latif Bhattai is in Dash, Karachi. Shah Abdul Latif is lovingly called Lal Latif. Shah Abdul Latif was born in Dash, 1689. When Shah Abdul Latif was born, Emperor Dash was ruling. Shah Abdul Latif's ancestors migrated Sindh from Dash, Herat. Okay, I'm telling some of the answers of the MCQs, and the remaining you have to search it from your book. Okay, people? Shah was born in a village called Dash. Shah Latif's father name was Dash, Sayyid Habib Shah. Shah Latif got married at Dash. A mound of sand is called Dashins in the Bhit. Shah Abdul Latif invented a musical instrument Dash. Latif's collection of poems is called Dash. Okay, before ending this session, I want to make this thing clear to all of you that please maintain your copy work, and before starting any of the chapter, please make sure to make title page of it and do the work as it is directed, because it will help you in the in the end of your time. मतलब आप लोगों को बाद में मसला नहीं होगा, कुछ इनकम्प्लीट काम नहीं रह जाएगा। ये आप लोगों के लिए ही इतनी ज़्यादा मेहनत करी जा रही है। दैट इज़ वाई वी people beg you, we people suggest you, we people plead you to please stay connected and to do the work as it is assigned to you. Is that clear? Till the time we will meet again, stay home, people, and stay safe.